नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप 2025 डिवीजन ए का क्वार्टर फाइनल नंबर 4 और चौथे क्वार्टर फाइनल में मेजबान उत्तर प्रदेश का सामना है कर्नाटक से। So with that, we come to the last quarterfinal of the day. We all have had a very exhausting day, but equally entertainingly enthralling day. The last quarterfinal to be played is going to be between Uttar Pradesh Hockey, who will be taking on the giants of Indian domestic circuit, Hockey Karnataka, in the orange jersey on the left of your TV screens. उत्तर प्रदेश की बात करें तो शारदानंद तिवारी, प्रशांत कुमार चौहान गोलकीपर, सुमित कुमार, आनंद शिवम, राजकुमार पाल टीम के कप्तान, आमिर अली, अजीत यादव, उत्तम सिंह, मनीष यादव, रोहित सिंह चौहान, सौरभ आनंद कुशवाहा, मोहम्मद फराज, राजभर पवन, विष्णुकांत सिंह, अतुल दीप, मनीष साहनी, अब्दुल अहद, रणविजय सिंह यादव और टीम के कोच हैं जितेंद्र सिंह भदौरिया। कर्नाटक की बात करें तो शान मुनप्पा गोलकीपर, राहुल सीजे, शेषे गौड़ा, सामंत सीएस, आर्यन उथप्पा, मोहम्मद राहिल टीम के कप्तान, भरत कुर्ताकोटी, लेविन सीपी, गणेश माझी, सुनील पीबी, आशिक हैं, मोहित गोलकीपर, सूर्या, दीक्षित नचप्पा, देश पुविया, विश्वास हैं जी विश्वास और सीबी पुवन्ना। टीम के कोच हैं विनया वीएस। The first quarter on its way, and it's Uttar Pradesh with the ball. It's got a great lineup. Shaardanand Tiwari, who is not part of the first 11, playing 11, will be definitely substituted later in the game. With the back pass, Faraz Muhammad with the ball, still keeping it crisp and tidy. Mind you, they must have seen the match between Haryana and Punjab, and they don't want to make that mistake, which Haryana did, conceding the goal in the first few minutes of the first quarter. Faraz Muhammad with the ball on the left flank. Can he take it forward? He was looking for a scoop there. He had good support coming in from the center line towards the 23-meter. It was Vishnukant Singh who was running in with the support. Uttar Pradesh knows that they're up against a giant team like Karnataka. You can look at the star-studded Raheel Muhammad, of course, their captain, the star in himself, Gajji Manesh, Nachappa, Vishwanath Ji, Shan Munappa, Sheshe Gowda, all these big names part of the Karnataka squad. And Ganesh Majji, of course, the lanky flank player. Obviously, he will be in the reckoning. Circle penetration for Uttar Pradesh very early in the game there. Uttar Pradesh realizes, Anand, that if they want to keep their chances alive, they will have to put pressure on Karnataka from the word go. Now, Atul Deep with the ball at the 23-meter decides to go with a back pass and try to create a little sloppy collection as far as Saurabh Kushwaha is concerned. Saurabh Kushwaha on the top of the D around the dotted line. He was in a very good position, but just a little over anxiousness. Probably they will have to control their nerves, Uttar Pradesh, if they want to make a game out of it and look for a
legitimate chance to seal their berth for the semi-final. और अब दक्षिण भारत की एक और टीम कर्नाटक के पास अवसर है कि सेमीफाइनल में जगह बनाई जाए, लेकिन सामने है मेजबान उत्तर प्रदेश। बढ़िया माइनस वहां पर सीबी पुअन्ना। ओ कमाल का चांस मिला है वहां पर, गोलकीपर को बीट किया। आसान टैप इन था वहां, मिस कर गए नंबर 5 कर्नाटक के सीजे राहुल। राहुल को पास किया था राइट फ्लैंक पर, राइट पोस्ट पर राहुल थे। अगर स्टिक लग जाता तो फिर निश्चित तौर पर यह गोल आता। इस मैच का अब तक का सबसे बढ़िया चांस। बढ़िया टर्न, लेकिन फ्री हिट मिला है उत्तर प्रदेश को। 23 मीटर लाइन के अंदर यह फ्री हिट है। सर्कल में अंदर जाने की कोशिश, सर्कल में अंदर चले गए हैं। पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी कॉर्नर मिल गया है यहां पर उत्तर प्रदेश को, और कोई चैलेंज भी नहीं आया है कर्नाटक की तरफ से। अगर फर्स्ट कैसल पर गेंद आएगी तो शारदा होंगे। फर्स्ट पे आई है शारदा, बाहर मार बैठे। मौका जरूर मिला था शारदा नंतीवारी को अपनी टीम को बढ़त दिलाने का। गोलकीपर को तो टेस्ट करते, मैं बार बार कहता हूं कि पेनल्टी कॉर्नर में आप गोलकीपर को तो एटलीस्ट टेस्ट करिए। अगर आप बाहर हिट करेंगे तो फिर आप उस पेनल्टी कॉर्नर को जाया कर रहे हैं। बढ़िया दबाव बनाया था, प्लेइंग एरिया में रखने में कामयाब हो गए। नंबर 11 सौरभ आनंद कुशवाहा। And after having earned the first PC in the first quarter, in spite of that injection from number 14 Vishnukant Singh, the attack was not as accurate as you rightly pointed out. So the first quarter goes goalless, and we'll be right back with the second quarter in this fourth and the deciding last berth for the semi-final between Uttar Pradesh and Karnataka. So the second half of this last quarter-final is on its way, and in the last 15 minutes or so, it's been evenly balanced. Waiting for the whistle here. The two umpires for this match are Gurbaz Singh and Sumit Mohite, the regular feature that we have seen. And with the back pass with Uttar Pradesh, Rajkumar Pal, the captain of Uttar Pradesh. We have seen this man so consistently in the domestic and national circuit. Rajkumar Pal. Karnataka. One thing that I've understood, that I'm sure the Karnataka squad has understood, that is Uttar Pradesh, in spite of their lack of experience, is not going to be no mug with the stick. It's not going to be that easy as Punjab found Haryana in the third quarter-final. There's fourth and the final quarter-final on the back line here. Number 44 for Karnataka, trying to penetrate the circle, succeeds in doing so. Nachappa Ayar it was, but good interception from Haryana, good defense. And that aerial, decent collection, I must say. Good hats off to number 13 of Uttar Pradesh, Pawan Rajbar. Obviously another famous name, Pawan Rajbar, for Indian hockey. स्ट्राइकर्स को पेनल्टी कॉर्नर अर्जित करने पड़ते हैं, मैन्युफैक्चर करने पड़ते हैं। बढ़िया माइनस किया वहां पर नंबर 7। गेंद बढ़ गई है, सामने की तरफ गई है। नचप्पा सर्कल के अंदर गए हैं, अभी भी नचप्पा के पास गेंद, मौका है, गोल आ गया है। क्या बात है, नचप्पा का बढ़िया वहां पर पास, और उस पास को कन्वर्ट किया है नंबर 5 सीजे राहुल ने। अक्षय, ये वही राहुल हैं जो राइट पोस्ट पर एक आसान टैप मिस कर गए थे। उत्तर प्रदेश की टीम लगातार अटैक कर रही थी, और अब राहुल का गोल सन्नाटा पसर गया है स्टैंड्स में।
What a brilliant goal that is. One of the finest field goals that we have seen here. We saw that earlier against in the Punjab and Haryana quarterfinal also. And what a run it was from Nachappa from the right flank right down to the back line there. And a brilliant pass, and how beautifully it was received by Rahul CJ and converting into that field goal. Absolutely as accurate as you would expect. That's what I'm talking about. When we talk about the Karnataka squad here, we talk about Shan Monappa, we talk about Ganesh Machi, we talk about Dikshit or Nachappa, but people like Rahul CJ and Shamanta CS, Aryan Uttapas, what a brilliant coordinated squad Karnataka hockey is, and that is the reason they are in the driving seat as far as this quarter-final is concerned. And with 1-0 up in the second quarter, unless and until Uttar Pradesh, as you rightly pointed out, the stands have been stunned into silence. What a beautiful goal that was. It was a delight to watch. As good as you would expect in a top-class hockey. And that is the reason, Anand, we've been talking about that how Indian hockey has been revived in the last 7 to 8 years. With 2 back-to-back Olympic medals, Hero Hockey India League, and the domestic circuit more active than ever. Karnataka once again into the attack. Number 37 with the ball. विष्णुकांत फ्लोटिंग प्लेयर के तौर पर लगातार फ्लोट कर रहे हैं इस छोर से उस छोर पर। आमिर अली वापस डिफेंस में ही खेल चलता हुआ। मनीष यादव वहां काफी रिस्की हो सकता है। नो मैंस लैंड का पास जरूर था, इंटरसेप्शन आया था विष्णुकांत सिंह की तरफ से। पेनल्टी कॉर्नर अवॉर्ड कर दिया गया है वहां पर। पेनल्टी कॉर्नर मिला है उत्तर प्रदेश को। वहां पर प्लेयर ऑब्स्ट्रक्शन के लिए मानने को तैयार नहीं है गुरबाज सिंह साहब। गुरबाज सिंह ने कहा है कि मेरी पैनी नजरों ने देखा है कि वहां प्लेयर ऑब्स्ट्रक्शन किया गया था। इंजेक्शन आया है। शारदानंद तिवारी रशर का क्लियरेंस आता हुआ। फर्स्ट रशर, एक और खराब ड्रैग फ्लिक। अब मौका हाथ से निकल चुका है। वो दम नहीं था उस ड्रैग फ्लिक में, कहीं से पावर जनरेट नहीं कर पाए शारदानंद तिवारी, और जिस कारण वो परेशानी। थोड़ा सा कंफ्यूजन नजर आया था वहां पर कर्नाटक के 3 खिलाड़ियों के बीच। अच्छी बात है कि क्लियरेंस आता हुआ। बढ़िया बढ़िया फ्लोर टैकल। ओ, गेंद को खुद लेकर जाना चाहिए था, पास देने की जरूरत नहीं थी। अगर खुद गेंद को लेकर आगे जाते तो मौका ज्यादा बेहतर बन सकता था। पास दिया और वहां पर कंट्रोल गंवाया गेंद पर। नाजुक अवसर पर आपका जो निर्णय होता है ना, वो कई बार बहुत अहम साबित होता है। उत्तर प्रदेश ने एक रियलिस्टिक चांस गंवा दिया है। Not only that chance, but also the last 2 penalty corners. With that hooter, it sums up the story for Uttar Pradesh. The 2 quarters have been totally goalless, but full marks to Karnataka for maintaining the lead consistently in the second half. After the first quarter was goalless, the second quarter, and a beautiful run from Nachappa was turned into goal by Rahul CJ. And bringing Karnataka hockey into 1-0 lead in this last quarterfinal of the day. All right, ladies and gentlemen, welcome back for the second half of the last quarterfinal here in Jhansi. And the reason why you can feel the noise decibel going up here in the Major Dhyan Chand Hockey Turf, AstroTurf Stadium,
in Jhansi is because the local team, Uttar Pradesh Hockey, is taking on the giant hockey Karnataka. I am Akshay Maurya with you. Along with me is Anand Srivastav. And in the third quarter, in the second half, the sides will change their angle. Now on your TV screens, it is red and yellow on fire. Karnataka will be playing from right to left. And in the blue jersey, the local Uttar Pradesh will be playing from left to right. Uttar Pradesh at the moment is trailing by 1 goal, but there is a lot of hockey to be played here. And we all know that things can change. Tables can turn around even in a snap of finger. Let's see if Uttar Pradesh can challenge the aggressive, the attacking Karnataka hockey with one up. But one has to remember that goal from Rahul CJ. Brilliant work done from the right flank by Nachappa IR. Taking the ball all by himself. Solo run on the right flank, then on the back line. And a beautifully, clinically placed pass to Rahul CJ. But eventually Rahul CJ, who converted that goal, making no mistake, all the hard work, well coordination. Uttar Pradesh now in the run, crosses the center line. Number 8 it is for Uttar Pradesh, Uttam Singh. Vishnukant Singh with the scoop. Very difficult to collect those scoops. There was only one player placed. It was Ajit Yadav who was waiting for that scoop. But obviously that reception was not going to be easy because he was completely marked by the defenders of Karnataka. Now Karnataka in the attack from the right flank. Can they score another one? Crosses 23 meter, crosses dotted line. Will circle be penetrated? There are 4 players stationed. But good work done from Uttar Pradesh and a very, very effective counter-attack. Central line cross, approaching the 23 meter line. Number 11 for Uttar Pradesh. It was Anand Kushwaha. But decides for a back pass there because the center was really, really crowded and there wasn't enough support present for him, Anand Kushwaha, on that occasion. So he decides to keep the possession with him. It's always very important to keep the possession with you. Not only it keeps you in the driving seat, but also puts a lot of pressure on the opposition. That is very, very important when you go for that run. स्कूप किया है, बढ़िया कलेक्शन, पैर तलाशिए और पैर तलाशा है, पेनल्टी कॉर्नर ढूंढ लिया है सुमित कुमार ने। सुमित कुमार ने बहुत बढ़िया पेनल्टी कॉर्नर ढूंढा और अब क्या उत्तर प्रदेश को इस मैच में बराबरी मिलने वाली है? डबल बैटरी, इस बार वेरिएशन आया है, क्या कमाल का रिफ्लेक्सेस, टोमाहॉक पर गोल, रीबाउंड और रीबाउंड पर टोमाहॉक और टोमाहॉक पर गोल आया है, कमाल का गोल। और जो उम्मीद नजर आ रही थी उस उम्मीद को पूरा कर दिया है यूपी के नंबर 8 उत्तम सिंह ने। उत्तम सिंह के स्टिक से टोमाहॉक और तीसरे क्वार्टर का हूटर भी साथ साथ बच गया है। तो हूटर की समाप्ति पर यूपी की उम्मीदें एक बार फिर जमा हो गई हैं। उत्तर प्रदेश 1, कर्नाटक 1, क्वार्टर फाइनल नंबर 4 के क्वार्टर नंबर 3 की समाप्ति पर। All right, so the last quarter is on its way, and the reason it is going to be the most exciting is Uttar Pradesh, the host state, has brought about the equalizer in the dying minutes of the third quarter. And what a brilliant work that was done by Uttam Singh. Penalty corner, earning it in the last few minutes of the third quarter and converting it with a tomahawk. Brilliant conversion. They've already had 2 penalty corners compared to only 1 penalty corner of Karnataka. So at 1-1, it is anybody's match. Anand and I, we have been constantly talking about how strong Karnataka is, and with the run, Karnataka from the right flank running towards the 23 meter. But Uttar Pradesh, along with the crowd support,
They have come out with flying colors. And no matter what happens in this quarterfinal, Anand, one must say that Uttar Pradesh has given full entertainment, top-class hockey. Good clearance from Uttar Pradesh, looking to build that attack from the right flank, but can they find enough support? Number 8 with the ball. Uttam Singh, the man who scored the goal, the man who brought about that crucial, important equalizer at the right moment. A lovely scoop coming in there. Can he find the support? There was one player stationed just for that scoop, Rajbar Pawan Rajbar, for that matter. Now Karnataka knows that they cannot really take chance against Uttar Pradesh. They have tasted blood, they have drawn the first blood, and now they want more. Scoop clears the 23-meter. Shouldn't be much of a problem. There was only one player at the back line for Karnataka receiving that scoop, but it was not to be. Suddenly Karnataka is looking a little toothless. Also with that green card when it was given, that time it was playing with one player short. Good to see that the full squad is back on the field now for Karnataka. Otherwise, it would have been a double disaster. The stalwart Karnataka team, along with Punjab, two of the favorites as far as this 15th Hockey India Senior Men's National Championship 2025 is concerned. Two of the most promising and the most looked forward teams, Team Punjab and Team Karnataka. But Uttar Pradesh here giving good fight there, and the goal scored. Has there been some contention? Karnataka is celebrating. Gurbaz Singh has gone for the referral. Straight away, Gurbaz Singh has gone upstairs for the video referral. Uttar Pradesh is confident that the referral would go in their favor. Karnataka has celebrated, but not too much. A very, very interesting video referral, Anand. It will be the most crucial. If Karnataka in this final quarter can maintain that lead to 2-1, it will be very difficult for Uttar Pradesh to make that comeback. They brought about the equalizer and they have scored now. And if this referral goes in favor of Uttar Pradesh, it will be very, very interesting. Gurbaz Singh and Sumit Mohite, two of the umpires for this last quarter-final between Karnataka and Uttar Pradesh. That looked quite on spot. For me, it looked quite valid, but it will be checked and verified. Only then it will be rewarded. Very, very crucial juncture for this last quarter of this last quarter-final. Prashant Kumar Chauhan. And the referral has gone in favor of Uttar Pradesh. The goal has been nullified. So still it remains at 1-1, evenly balanced. Last quarter on its way. And Uttar Pradesh has been brought back to life. इस मैच में जान बरकरार है उत्तर प्रदेश के समर्थकों के लिए भी और टीम के लिए भी। जैसे जैसे ये मैच आगे की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे पेनल्टी शूट आउट की आहट सुनाई देने लगी है। आज 2 क्वार्टर फाइनल का फैसला पेनल्टी शूट आउट से हुआ। सिर्फ एक क्वार्टर फाइनल जो पंजाब ने जीता था हरियाणा को हराकर उत्तर प्रदेश, ओहो गोल आ गया है। मेजबान उत्तर प्रदेश की टीम इस चौथे और अंतिम क्वार्टर में न सिर्फ गोल कर दिया है, बल्कि इस मैच में लगभग अपनी जीत भी पक्की कर दी है। कमाल का फील्ड गोल, गोलकीपर अपनी गोल लाइन से आगे थे और ये गोल आया है नंबर 13 पवन राजभार की तरफ से। उत्तर प्रदेश 2, कर्नाटक 1। Anand, just when you were talking about that we are going in for a shootout,
barring that Haryana Punjab, which was decided in the stipulated time. Uttar Pradesh has brought about a spectacular field goal and brought their team right into the reckoning once again, into the attack. Now with the highest morale, number 8 Uttam Singh, the man who has scored the goal. Another attack. Oh, it was slightly half-hearted as far as Vishnukant Singh is concerned, but in the dying moments, it is Uttar Pradesh who is in the driving seat. Look at that cheer all around the stands here in the Major Dhyan Chand Hockey Astrotop Stadium in Jhansi. And why not? Because they were up against a daunting Karnataka hockey unit, but Uttar Pradesh team has brought about a brilliant game. Number 14, once again, Vishnukant Singh. Now Karnataka in a very, very desperate situation. They've been totally stunned. They've been stunned into silence. Karnataka could not believe it. And especially that field goal. You know what happens, Anand? You know, in a penalty corner, it is anybody's game. Of course, the one who's taking the penalty corner are in the driving seat. But that field goal from Uttar Pradesh has literally taken the Karnataka team by surprise. They couldn't believe it, that how could it happen? All through the game, they have been into the driving seat, Team Karnataka. Suddenly, Uttar Pradesh has decided to change the gear and brought about a brilliant goal. Number 10, he's been boxed out in the corner, Rohit Singh Chauhan. Can he take that ball out of that corner? Can he make something out of it? Mohite keeping a close eye on it. एरियल से फ्लैंक चेंज किया है, अब तो टाइम पास करेगी यहां पर उत्तर प्रदेश की टीम. सर्कल एंट्री, पैर तलाशिए, क्लीन डिफेंस. ओ बहुत बढ़िया डिफेंस. अब चलिए साउथ इंडियन एक्सप्रेस तेजी से. राहुल माइनस जरूर किया, लेकिन बहुत ज्यादा समय तक गेंद को अपने पास रखा. लॉन्ग स्कूप गेंद को मांगा है वहां पर पवन राजभर ने. पैर पर गेंद टकराई और अब ये सोची समझी रणनीति है उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को. ये जरूर कोच ने मैसेज दिया होगा कि आप समय जाया करिए. एक टीम के पास बर्बाद करने के लिए समय है, एक टीम के पास समय की कमी है गोल करने के लिए. उत्तम बचाव आया है. रिबाउंड पर क्या गोल आने वाला है? क्या पेनल्टी कॉर्नर आएगा? पेनल्टी स्ट्रोक. पेनल्टी स्ट्रोक मिल गया है और शारदानंद तिवारी गोल हो गया है और उत्तर प्रदेश ने अपनी जीत पर मोहर लगा दी है. अब कर्नाटक के पास इस मैच में करने को कुछ भी नहीं है. एक काम वो कर सकती है टीम हूटर का इंतजार. 3-1 की बढ़त और टाइम जज की जो भूमिका में हैं मनी मारन किसी भी समय हूटर बजाने की तैयारी कर रहे हैं. शारदानंद तिवारी ने पेनल्टी स्ट्रोक को कन्वर्ट किया और उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के साथ साथ जो उनके समर्थक हैं उनमें जोश बढ़ता हुआ. सर्कल एंट्री और फ्री हिट मिलता हुआ वहां उत्तर प्रदेश को. उत्तर प्रदेश के अगेंस्ट टर्न, सर्कल एंट्री मिल गई है. पैर पर नजर रखिए, लेकिन उत्तर प्रदेश का डिफेंस बहुत चौकस, बहुत मुस्तैद है. अभी भी ऐसा लग रहा है कि उम्मीदें बरकरार. बहुत क्लीन डिफेंस. गेंद ऊपर उठी थी. मोहम्मद राहिल. चलिए इस हूटर की आवाज के साथ मेजबान उत्तर प्रदेश पहुंच गया है
15वीं हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप 2025 डिवीजन ए के सेमीफाइनल में उसने कर्नाटक को चौथे और अंतिम क्वार्टर फाइनल में हरा दिया है 3-1 के स्कोर के साथ। उत्तर प्रदेश सेमीफाइनल में और कर्नाटक का सफर हुआ है समाप्त।